Good evening, good evening, good evening, guys. Let's start with a fresh chapter accounting for branches, including foreign branch. Before starting any session, better first we will recall all accounting standard names. Number one, disclosure of accounting policy. Number two, inventory valuation. Three is a cash flow statement. Number four, contingencies and events occurring after balance sheet date. Number five is net profit or loss for the period prior period items and changes in accounting policy. Six number beta removed. Seven number construction contract. Eight number is removed. Nine number revenue recognition. 10 number property plant and equipment. 11 number effects of foreign exchange rates. 12 number accounting for government grant. 13 number is accounting for investment. At 14 number accounting for amalgamation. 15 employee benefits. 16 borrowing cost. 17 segment reporting. 18 related party disclosures. 19 is earning per share. 21 is consolidated financial statement. 22 accounting for taxes on income. 23 investment in joint venture in consolidated financial statement. 24 discontinuing operation. 25 interim financial reporting. 26 intangible asset. 27 investment in joint venture. 28 impairment of assets, and 29 is provisions, contingent liability, and contingent assets. I hope you remember all these names, and let's start with the accounting for branches, including foreign branch. If you remember, this chapter we have divided in three parts. So कौन से तीन parts थे? So this is divided in three parts. Number one is a dependent branch, second one is independent branch, and last one is a foreign branch. Okay, what was the homework, beta? I think illustration number 4 to illustration number 8 was where homework for Wednesday, beta. Yes, Wednesday ko last session we have completed. Then Thursday, Friday, yes, you started with the, I think, internal reconstruction. Some remaining questions you have completed yesterday, and now we are going to start with accounting for branches, including foreign branch. Homework, tell me it in the comment section. जल्दी 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 बताओ कि होमवर्क आपका कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है. फटाफट बताइए बेटा, होमवर्क कंप्लीट हुआ है क्या नहीं हुआ है. हाँ जी, बोलिए जल्दी जल्दी. यस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलिए आज सब लोग ज्वाइन हो गए हैं. साहिल, प्रिंस, रश्मिता, निनाद, यस बेटा, मानसी, आदि. चलो, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो क्वेश्चन नंबर 3 to 8, एंड ऑल्सो वी हैव टू रीड दी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी आपको रीड करना था. सॉरी, इंडिपेंडेंट ब्रांच में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों बोल रहा हूँ. यस बेटा प्रिंस, नाउ आई एम बैक टू पुणे, तो इसलिए आपको खुशी अलग ही दिखेगी. हेतल, बेटा यहाँ आने के बाद थोड़े हमारे जो स्टाफ होते हैं, कुछ स्टाफ एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफिस जैसा 6 बजे, मतलब 6 बजे ही निकलते हैं. तो अभी आज मेरा एक स्टाफ एग्जैक्टली 6 o'clock नहीं हुआ, तुरंत निकल गए. चलो राह ही देखते हैं. ओके, जोक्स अपार्ट, चलिए आ जाइए. सर कौन सा इलस्ट्रेशन डिफिकल्ट था, तो अकॉर्डिंगली टेल मी. सो आई विल फर्स्ट कवर दोज इलस्ट्रेशन एंड देन वी विल सॉल्व. यस, इजी क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस दोनों बता दीजिए. हाँ जी सर, जल्दी जल्दी बोलिए. जल्दी बोलिए, विच इलस्ट्रेशन आर डिफिकल्ट वन. Ram beta, GSTB and purchases are similar. So purchases are directly by branch from outside market, and GSTB is like purchases from head office. So ultimately it's a purchases for branch. Ultimately it is purchases for branch. Illustration 7 and 8. So we'll do first. Yes. Illustration 5 भी explain कर दीजिए. Sumit is saying. चलो, तो we'll start today's session with illustration 7 and 8. First, I will explain you all concepts, and then बेटा I will show you only working over there. You can take a screenshots. आप लोग screenshots ले सकते हो. चलिए आ जाइए बेटा. मॅडम मला पाण्याची बॉटल द्या.
आ गए। एक बार देख लीजिए बेटा, कम टू इलस्ट्रेशन 7 फटाफट। पाण्याची बॉटल बाहेरच्या साईडचा ड्रॉवर आहे ना, ऐक ना संग्रह, मॅडमला का नाही जमणार आहे? अरे मॅडमला सांग ना थोडस, सरांचं लेक्चर चालू आहे. चलो, इलू 7, अर्नॉल्ड ऑफ दिल्ली trades in ghee and oil. It has a branch at Lucknow. So ghee and oil, he dispatches lecture 25 tins of oil with 1000 per tin. हिशोब पण करायचा आहे. चलो, सो 25 टीन्स पर मंथ. चलो ध्यान दीजिए बेटा, सॉरी, 25 टीन्स इंटू 1000 इंटू 15 टीन्स. कैलकुलेटर, कैलकुलेटर वर्किंग. हम्म 3,75,000 तिथंच राहिलं. 3,75,000. ओके, चलो. And 15 teens multiplied by 1,500 into 12, 2,70,000 every month. So we have to calculate by multiplying by 12. Hey, what I have done? Sorry, 25 teens into 1,000 into 12. Sorry, this is 3 lakhs, beta. Why I multiplied by 15, I don't know. 15 teens, 1,500 rupees, and 12 months. Total is 5,70,000. Branch incurred some expenditure which is made out of its collection. This is in addition to the expenditure directly paid by the head office. So additional to the expenditure जो है वो हेड ऑफिस के अलावा है. यस बेटा, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक, मेरी मिस्टेक थी बेटा. सैटरडे तो बहुत से बच्चे बेटा आराम से कर रहे हैं. हाँ, आज क्यों लेस स्टूडेंट्स? सैटरडे इसलिए अटेंड डेली सेशंस बेटा. एंड ब्रांच इज डिफिकल्ट वन. 15 मिनट ज्वाइन होने को नहीं लगते आप लोगों को, और फर्स्ट 10 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल फॉर रिवीजन पर्पस. तो जितना भी हो सकता है थोड़ा ध्यान दे के करना. In Pimpri Chinchwad branch, beta, we are going to start with the revisions. So students, please make note कि revisions will be free of cost. Revisions जो होंगे फटाफट फटाफट, I will take a revision of accountancy. Okay, so those students बेटा who are interested can enroll your names. तो आप लोग वो कर लेना एक अच्छी खासी. And might be I will we do with WRC 2-3 branches together. तो हम लोग 2-3 ब्रांचेस का साथ में रिवीजन बैच रखेंगे. सो ये सब कुछ मैं आपको अनाउंस करता रहूंगा, सो डोंट वरी. तो आप लोग कांटेक्ट में रहना, वेबसाइट के ऊपर भी आ जाएगा ब्रांच के. सो आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट योर रिविजन्स ऑल्सो. तो रिविजन्स विल डू फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. ओके, एंड इफ यू हैव फिनिश्ड, यस अंकुर, कुछ नहीं, आप एक बार एनरोल करने के लिए रिविजन्स में इंटरेस्टेड होंगे तो एक नंबर पे बेटा सिर्फ इंटरेस्टेड इन रिविजन्स करके पिंपरी चिंचवड ब्रांच जो मेरे चैनल में भी बेटा मैंने लिख के रखा हुआ है, सो आप उनको बोल देना.
Yeah, I'm interested in revision. So they will make a group of you. That is we online, but online, offline, nothing. Yes. Now we are also not working off online, offline. So we are interested only in online, beta. Okay. It's near Pune. So it is only for your benefit. Chaliye. So some expenditure is made out of its collection and in addition to the expenditure directly paid by the head office. Yes. It's like a booster batch and then beta marathon batch before exam 1 day. Marathon batch will be 8 days before exam. So in which we will cover full ye ho jayega. So that it will be very beneficial to all of you. Okay. And it is a combined efforts of all 3 4 branches. So I will inform other branches also. ठीक है. It will be in English or Hindi. तो WRC है तो हिंदी में होगा. So batches, yes, I will try to make it in Hindi plus English. Okay. So Pooja ji, similar strategy will apply over there. But that will be more towards Hindi because Western region better they are comfortable with Hindi. Mm, how we'll get the notification? It will be of 7 8 10 days better. Okay. All subjects. ठीक है चलो. Following are the other details. Purchases घी and oil. ये डेबिट हो जाएगा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिल्ली का भी डेबिट आएगा. सी बेटा. सो दिल्ली का वी विल प्रिपेयर. यू कैन राइट ओवर देयर. दिल्ली का वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट. सो राइट डाउन. ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट दिल्ली का प्रिपेयर करेंगे. एंड लखनऊ का वी विल प्रिपेयर. नाउ डेटर्स मेथड इज मोर इजी. व्हाई डेटर्स मेथड? ब्रांच अकाउंट. Debtors method. Why? Whenever opening and closing balances are given, so you can write in your 100 pages book. When branch account started, okay, there only you can mention, आप उधर ही mention करो. Means debtors method is followed if opening and closing balances are given. If opening and closing balances are given, then debtors method. So trading and P&L because it's a head office. So head office will prepare trading and P&L regular books. Regular books. So they will prepare trading and P&L account. Who will prepare trading and P&L? Head office will prepare. Okay. And Lucknow, it is page number 7.15.35. Yes, beta. And Lucknow will prepare for Lucknow profit. We will prepare branch account under debtors method. Branch account under debtors method. Expenses paid by HO sales. Gurpreet, I will try my best. Okay. Sales credit में आएगा. Branch accounts में sales we never record. We never record. Okay. We record only remittance. So branch account we think from the angle of debtors method we think from the angle of HO. Delhi opening stock, debit, debit. Debtors no, cash no, furniture no, and this also no. Okay. So opening balances are not important except stock because trading and P&L account, we maintain only stock account. Trading and P&L. We never maintain debtors, cash in hand. So trading, Delhi का किधर जाएगा बेटा? Trading and P&L. And all these are debited, all debited and credited closing balances. Lucknow, we will prepare branch account. So all are important branch accounts. Mein. Additions to the plant and machinery 6,02,750. So here 6,02,750. You can write additions. For plant and machinery or furniture पे record
depreciation in P&L. यस, दिल्ली में क्या रिकॉर्ड करेंगे? सी बेटा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट वी विल प्रिपेयर फॉर दिल्ली हेड ऑफिस। एक बार हिंदी में समझ लो, हिंदी में समझ लो। देखो बेटा, इसमें दो ब्रांचेस है, सॉरी, एक हेड ऑफिस है, एक लखनऊ ब्रांच है। सो दिल्ली जो है वो ट्रेडिंग एंड P&L बनाएगा। दिल्ली क्या बनाएगा? ट्रेडिंग एंड P&L। और लखनऊ का प्रॉफिट ढूंढने के लिए वी विल प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर्स मेथड। तो ये तो ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। सो दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। विच वन इज न्यू कॉन्सेप्ट बेटा? विच वन इज न्यू कॉन्सेप्ट? दिल्ली। दिल्ली विल प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। सो ट्रेडिंग एंड P&L, गॉट द कॉन्सेप्ट? से यस और नो? दिल्ली क्या बनाएगा? चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। दिल्ली क्या बनाएगा? ट्रेडिंग एंड P&L। यस, एंड लखनऊ क्या बनाएगा बेटा? ओनली ब्रांच अकाउंट। ओके, ब्रांच अकाउंट में ऑल ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आर गिवन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा 10% एंड 15%, एंड ऑलरेडी एडजस्टेड इन अबाउ फिगर्स। वेरी गुड, ये दिया हुआ है ऑलरेडी एडजस्टेड इन अबाउ फिगर्स। द ब्रांच मैनेजर, इट्स अ न्यू एडजस्टमेंट। 10% commission after charging such commission. So this is a new adjustment. Okay. हाँ जी बेटा, 10/110 after charging such commission. So whatever profit you will calculate into 10/110 will be your commission. Now why? Okay, so whenever such sentence is there, after, 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 तो आपको कैसे याद रखना है? कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, profit after commission. What is the logic? So 10% commission on profit after commission. So what is the profit before commission? 110. So whatever you calculated into 10/110 cross multiplication will be your commission. So this is the logic. What is the logic? So commission is on profit after commission. So before is 110. So whatever profit you will calculate into 10/110 will be your profit after commission. Sorry, commission. कौन है? General manager is entitled for 2,000 per month, 24,000, and expenses are debited. Expenses are debited. Chalo. So got the concept? Yes. So whatever you understood, please write it in comment section. What are new points? So new points क्या है? जल्दी से comment section में लिखिए. Whatever you understood, write it in comment section. So accordingly, I will try to solve this question. Yes, beta. Whatever you understood, please note down. I'm waiting for you.
यस बेटा हर्षित, डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स को, बेटा इब्राहिम, देख बेटा, तू जो भी प्रॉफिट निकालेगा, देख इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो ये तेरा प्रॉफिट आएगा। पर ये प्रॉफिट में से तुझे कमीशन माइनस करना है। अभी कमीशन उन्होंने क्या बोला है, 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे। सो 10% आफ्टर कमीशन मतलब इसको 100 एज्यूम किया, तो इसके ऊपर 10% मतलब प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आएगा बेटा, 110। अभी इनकम माइनस एक्सपेंस करके जो प्रॉफिट आएगा दैट इज बिफोर कमीशन होगा, और तुझे कमीशन निकालना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का बेटा, 10/110। हमने ये एडजस्टमेंट नहीं होती है, जब भी तुझे नहीं समझ में आया, सपोज 15% है, तो तू क्या करेगा, सिर्फ देखने का, दिस इज आफ्टर कमीशन और बिफोर कमीशन। यदि बिफोर कमीशन होगा तो उसके ऊपर डायरेक्ट 15% लेंगे। यदि कमीशन इज ऑन 15% प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो डायरेक्ट 15/100। पर आफ्टर कमीशन होगा तो फिर 15% आफ्टर कमीशन पे तो 115। ओके, ऐसे एडजस्टमेंट याद रखना। 20 होगा तो 20/120, 20/120। सो बेटा यू हैव टू चेक दैट सेंटेंस कि दिस इज आफ्टर कमीशन और बिफोर कमीशन। सो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स अंडरस्टूड बेटा, बिकॉज माई फाउंडेशन बेस्ड स्टूडेंट्स बेटा दे नो दिस प्रोविजन ऑलरेडी। सो जो मेरे से फाउंडेशन पढ़े हुए हैं बेटा उनको कोई दिक्कत नहीं है। 2000 डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स उनके लिए ये थोड़ा सा अलग था, डायरेक्ट एंट्री वालों को अलग था बेटा। वेरी गुड सुरेंद्रन, वेरी गुड। निनाद मस्त बेटा एकदम। Delhi will prepare trading and P&L account. Lucknow will prepare branch, and under data's method, commission is 10/110. दोनों व्हाट्सएप 93 ओनली आंसर। ओके, चलो अभी हाउ टू सॉल्व। बेटा पहले वी विल प्रिपेयर लखनऊ ब्रांच प्रॉफिट। ओके, चलो हाउ टू कैलकुलेट लखनऊ ब्रांच प्रॉफिट। वेरी गुड बेटा, मेनी स्टूडेंट्स। बेटा दोनों मेथड में डिफरेंस मतलब एचओ खुद का ट्रेडिंग एंड पीएनडल ही बनाएगा ना। दोनों मेथड में डिफरेंस मतलब क्या, एचओ खुद का ट्रेडिंग एंड पीएनडल ही बनाएगा। वो ब्रांच के लिए दो मेथड्स है। सी एचओ विल प्रिपेयर ओन अकाउंट्स इन ट्रेडिंग एंड पीएनडल ओनली। ब्रांच के लिए, ब्रांच प्रॉफिट ढूंढने के लिए दे हैव टू ऑप्शंस, आइदर गो बाय डेटर्स मेथड और स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, बिकॉज ब्रांच इज डिपेंडेंट and if it is independent so today we are going to see it. So in that case branch will prepare own trading and P&L account. So independent we are going to see better today itself. Okay, chaliye. So what is the first step? So we will prepare branch account. Okay, so same method, now branch account. For branch account what is the first step? Opening balances. Beta, yes, just understand it. You can take a screenshot. अभी opening balances में क्या क्या आएगा? 17,000, 27,000, all these opening balances. Okay, 17,000. I won't write names. Okay, beta, because here we will prepare all names के हिसाब से। 75, 750 is your debtors. Cash in hand 7540 and 6250. Say yes or no. Yes, sir. Then first will be 2 GSTB. Now GSTB we calculated 3 lakhs and 2 lakhs 70,000. 5 lakhs 70,000. Okay, line by line. Purchase direct expense, no. Expenses paid by HO. So HO angle. HO angle, yes. So we are going to record it. HO के एंगल से है तो रिकॉर्ड करेंगे। To cash. To cash. What we are going to record?
to cash. How much is the cash, beta? 14,250. Expenses of branch paid by HO. Then sales we won't record. Collection we won't record. 613,250. Remittance. So cash account debit to branch. HO will record cash to branch. 613,250. Closing stock. Sorry. Now closing balances. By closing balances, beta, stock 13,250, oil 44, 750 ghee and oil we have written. Debtors के लिए working note 1, cash in hand is there 12,350. We will open that also, and 5625. Debtors account में 732,750. We will assume total sales is a credit sales because we do not have cash sales and credit sale bifurcation. Assume credit sales because we do not have bifurcation, no. So two sales 342,750 and 315,730. We do not have bifurcation. Similarly, cash account, beta. Cash account we will open. Sorry. Debtors. Sorry, beta. Sorry. Sorry, it's my mistake. I have to see memorandum debtors of 75,750. Wrongly I considered debtors of this. Sorry, beta. It's my mistake. 732 no. 75,750. किसका debtors? Branch का. I made a mistake. Branch का debtors. It's my mistake. Sorry. 75,750. And cash to balance brought down 7540. एक मिस्टेक हुआ था मेरा डेटर्स में. सेल्स बेटा, हाँ सेल्स बराबर है 342,750 and 315,730. Collection. So by cash. And here two debtors. So what is the collection? 647,330. There is no bad debts and all, beta. Okay. Remittance. By HO, we remitted 613,250. We remitted 613,250. 613,250. Buy balance carried down 55,250. 55,250. And buy balance carried down 86,900. 86,900. Okay. So see. Yes. 86,900. And what is the balancing figure of cash, beta? Expenses paid by
branch made expenses. So which is not important in our case. So you already aware about this adjustment. Debtors method में not important, stock and debtor में important. So you must know this adjustment. What is the closing balance of cash? 12,350. Again wrong. Again wrong. 29,270. Cash का तो 29,270. Expenses made by branch, which is of no use. So debtors 86,900. Okay, now you can take balancing figure, but before that you have to write commission 10 upon 110 into whatever the profit is. So what is the profit? Take on calcis 17 plus 27 plus 75.75 plus 7.54 plus 6.25 plus 570 plus 14.25 minus 613.25 0.9 12.58 335 329. Sorry, 53032. Let's check the answer. Yes. So branch account is very simple, beta. We will prepare it by using normal our branch account method. Got the concept? Any difficulty in this? Thank you, beta Ibrahim. अनमोल आज बताऊंगा बेटा. यस यस यस. गलती से लिखा था कैश अकाउंट. यू हैव टू फोकस ऑन ओनली ब्रांच डेटा. बेटा जेवियर जॉय ट्रेडिंग एंड P&L account is for Delhi head office. We'll prepare trading and P&L account, but only for Delhi. So they will merge this branch profit, no beta. And how they are calculating branch profit? By branch profit, they will calculate by using debtors method. Okay? Or any question? हर्षित आज आपको क्या हो रहा है बेटा? आज घर पे आए हो ना बहुत दिनों के बाद. थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो रही है. सॉरी. इट्स माय मिस्टेक बेटा. यस, एक्सट्रीमली सॉरी. आई आई होप आई कंसिडर कैश बैलेंस. थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से. नैनशिप बस बेटा ये कुछ नहीं है. शॉर्ट में एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है बेटा. ये देख. आई गिवन इंडेक्स ऑल्सो. दिस प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. ए प्लस कैटेगरी है. पार्ट वन ब्रांच प्रॉफिट बाय यूजिंग डिपेंडेंट मेथड. डेटर्स मेथड हमने निकाला. ब्रांच प्रॉफिट डेटर्स मेथड से पार्टली एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच एंड पार्टली पेड बाय प्रेचो. मतलब ब्रांच कैश इज ओपन. ब्रांच डेटर्स बैलेंसिंग फिगर इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. Branch debtors balancing figure is closing balance. Branch, sorry, you can check it. Branch debtors balancing figure is closing balance. इंडेक्स में गलती हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस ये ब्रांच का डेटर्स का बैलेंस है. क्लोजिंग बैलेंस. बैलेंसिंग फिगर. एक सेकंड. बैलेंसिंग फिगर इज
पूरा लिखना क्लोजिंग बैलेंस। एंड मेमोरेंडम कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर इज ब्रांच एक्सपेंसेस, न्यू एडजस्टमेंट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। और ये फर्स्ट टाइम हमने ओपन किया, विच वन बेटा, फर्नीचर अकाउंट। एंड मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट जो था, सब कुछ लिख के दिया है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स बाइफर्केशन नहीं था, तो हमने दोनों लिया सेल्स में, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट साइड पे भी हमने लिया बाय कलेक्शन बोथ, बिकॉज वी डू नॉट हैव बाइफर्केशन। कितना अच्छे से लिख के दिया है एवरीथिंग। प्लांट एंड मशीनरी का, रूपाली रुको रुको रुको, प्लांट एंड मशीनरी का मैं बताता हूँ, डोंट वरी। प्लांट एंड मशीनरी इज इन हेड ऑफिस बुक। यस, इसका आंसर देखिए। देखो आंसर भी वेरी इजी, सो हाउ टू रिपीट इट। आंसर को देखो बेटा एक बार। इंडेक्स में सब कुछ लिख के दिया बेटा, आप लोग यदि इंडेक्स फॉलो करोगे ना, इतना मजा आएगा ना आपको। चेक 1727 75 750। फर्नीचर भी लिखा, डेटर्स का वर्किंग नोट 1, बाय बैलेंस कैरी डाउन 86,900, एंड बाय एक्सपेंसेस 29,270। यस, जिसका कोई यूज नहीं है। दिस इज मेड बाय ब्रांच। कौन से मेथड में? रिकॉर्ड इफ स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। कौन सी मेथड होगी तो रिकॉर्ड करो? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, क्योंकि डेटर्स मेथड में वी थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ एचओ, एंड एचओ इज नॉट पेइंग दिस एक्सपेंसेस, सो डेटर्स मेथड में वी वोंट रिकॉर्ड इट। स्टॉक एंड डेटर्स होता तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया रहता। ये एक प्रॉब्लम किया था, आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 3 था। इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑलरेडी डन। से यस और नो। और कुछ? तो ये हो गया हमारा ब्रांच का प्रॉफिट 53,032। इज वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू रिकॉर्ड इट। मैं लिख के दूं या आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बाद में कर लोगे? सो यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग द आंसर, और शुड आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड यू विल रिकॉर्ड इट आफ्टरवर्ड्स? यस, बताइए बेटा। थोड़ा मैं स्लो ही जा रहा हूं, आई नो ब्रांच इज डिफिकल्ट वन, बट बेटा यू ऑल्सो नीड टू डू प्रैक्टिस एट होम। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। ब्रांच का तो प्रॉफिट हो गया, पार्ट 1 इज ओवर। एकदम इजी है बेटा, एकदम इजी। 58,335 कैसे कैलकुलेट किया? नया जोशी, ये देख, इसकी टोटल माइनस इसकी टोटल, बैलेंसिंग फिगर है बेटा वो। लोकेश, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम बेटा, इफ यू आर इंटरेस्टेड एवरीवन। कमीशन नहीं है बेटा, कमीशन नहीं है। कमीशन 10/110 करके कमीशन 5303 है। इसमें से रेड पेन कौन सा है? तो कमीशन रेड पेन है। साला है। हम्म। ओके। पेपर। हम्म।
Any difficulty, beta? Any difficulty? Expenses is a balancing figure, na beta? It's a balancing figure. Total of these balancing figure, beta, minus these two. Lokesh, you are asking such a silly question, beta. You are so strong. And why are you asking such silly questions? No problem. Anmol, sir, should we have to take test series? Uh, Actually, if you solve 2, 3 times these questions, actually no need to spend any amount. But if you don't have beta, that much, what I can say, dedication, then beta you can take test series. But I know it's actually of no use. If you solve this question and institute mock test, if you solve, it's good. But means I always depend on institute material, and whenever I pass beta, I always prefer institute material and past examination questions, and that is sufficient in CA exam. And to get the clarity of all concepts, even in costing, I don't think you have to join any, कि any private coaching and all this, because मुझे ऐसा लगता है it's your choice, but no need to spend बेटा 15,000 10,000 12,000 rupees. बस 2,000 3,000 रुपए हम लोग भी कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. So costing sessions are also बेटा, when we conduct through branches we charges very nominal fees. And even in institute, कि that is, हाँ, one thing, yes, I want to tell you that the institute is trying to give you best lectures, but time limit is there, and the interaction with faculty is a difficult one. Means you cannot interact with, and one problem is there. Yes, your repo matches with one faculty, and suddenly there is a change. So that is also better. Yes, I know that some problems are there, but we are trying to improve it. We are taking best faculty, and institute is also not dependent on one faculty. So try to understand. And suppose if you are used to, if any faculty, like suppose me, so you can better take my other sessions from branches. It is of very cheap cost. तो आपको ऐसा कुछ नहीं है. But no need to spend such amount on tests, because they will charge you almost one subject 2,000 3,000 rupees. That, and instead of that you take a time to recall the concepts, आप उसमें लीजिए, या आपको लगता है तो आप क्रॉस क्वेश्चंस के लिए देखिए, मतलब एक फ्रेंड के साथ क्रॉस क्वेश्चंस पूछ के देखिए. Why to waste money? सर आरटीपीज भी आने वाली है ना सर? यस बेटा, नेहा, जल्दी से आरटीपी भी आ जाएंगे 1 महीने में. आरटीपी के ऊपर काम चालू ही रहेगा बोर्ड ऑफ स्टडीज की टीम का. यस. सुरेंद्रन इज सेइंग कि I solved these problems 2 to 3 times and now I understood both methods. Your teaching is awesome and easily understood. All concepts are very clear. Thank you, beta. Thank you. See, that's why I always tell you to try these sums at home. मैं आपको कभी भी spoon feeding नहीं करता हूँ. I don't like to do spoon feeding. I know that limited time is there. But if you try these questions at home, डेफिनेटली टुडे सेशन इट विल बी अ वेरी माइंड ब्लोइंग सेशन फॉर यू, क्योंकि आपको ये सेशन में पूरा समझ में आया होगा. दोज हु ट्राइड इट. नाउ व्हाट इज द मिस्टेक दैट यू आर डूइंग? ओके, मींस आई ऑलवेज टेल other faculties also, कि you don't, in practical subjects, you don't tell students to directly solve the questions with you. You first explain them provision or that concept. So for example, explain branch method, branch data. You solve one problem. Okay, faculty must solve only one problem, and they should give you homework of at least 2 to 3 hours. But what happens? I have seen such classes in the morning 7 o'clock till night 7 o'clock. Students are sitting on one place. How they would get time to do self study? No, beta, it's not possible. तो आपको सिर्फ और लास्ट के 2 महीने में कुछ याद ही नहीं आता है कि व्हाट वी डिड इन द फर्स्ट टॉपिक, बिकॉज यू नेवर टच फॉर दैट सॉल्विंग क्वेश्चंस. ओके, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम. सो स्पून फीडिंग इज वेरी डिफिकल्ट. तो आप लोगों ने, इवन फॉर कॉस्टिंग, आई विल सजेस्ट यू कि जब भी आपके सेशंस चालू होंगे फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्टिंग, यू फर्स्ट सॉल्व योर questions by your own way and then watch faculty's session. Okay, otherwise before attending that live session, you at least try that 2 3 questions better. And I always give you homework in practical problems
I always give you, I explain that concept because now it's accounting standard beta. Accounting standard mein I cannot make you happy, like costing and financial management. Financial management costing, what happens ki normally, if concept is there and then immediately illustrations, it's like branch accounts. So in branch accounts, I explain you concept, then better problems. But normally what happens in accounting now it's very difficult. Why? Because only accounting standards is really, you can say it's very painful for CA students now. But you should enjoy. You should enjoy. नहीं बेटा इब्राहिम, तू जीएसटी भी नहीं लिख सकते. ओके, चलिए आगे जाते हैं. आई होप you understood it. Now, Veda, we are going to prepare trading and P&L. Tomorrow's session is very, very important. So don't miss tomorrow's session. Okay. चलिए. Now trading and P&L. We write only opening stock. पुनः आएगा क्या देवराज तो ऑफलाइन के लिए मेरे पास? चलो. Okay. Now opening stock. What is the opening stock now? Better Delhi. Yeah, now I will focus only on Delhi. 150 plus 350. So it's a 5 lakhs. Then better line by line. Two purchases. 1475 plus 2932. 44 lakhs 7,000. Okay, both. You can write presentation, you can take it afterwards. Direct expenses 383. In trading account, we will write it. Two direct expenses. Sales 1846 350 plus 27 41 250. So 45 lakh 87 600. And beta GSTB 5 lakh 70,000. You will deduct from purchases. Deduct from purchases separately. So GSTB is a new thing. Here red pen hai. You will deduct it from purchases. Why? Because out of purchases, suppose if I purchase 100, out of that 20 I have sent to branch. So my purchases net is 80 only for head office. Head office के लिए my net purchases is 80. Okay. That's why we deduct GSTB. Got the concept? So GSTB को minus करना है from purchases. So what is the good thing beta? Deduct, here you can write by red pen, deduct GSTB. So this is IMP, new adjustment. So write down this is new adjustment. Deduct GSTB. So out of 100, 20 units you send to branch. So only 80 is your purchases, beta. Sales return. Don't refer Lucknow, only Delhi. Opening stock return. Okay. Now what is the depreciation?
So 10%. 10% means 21,500 into 10%. So 2150, where I will write depreciation in P and L. So trading is separate, depreciation P and L में. How much is the depreciation, beta? 2150. And what about plant and machinery? C, 3,07,250 plus addition 6,02,750 into 15%. So 136,500. And see the difference. See the difference, minus 136,500. Yes, you will get the 773,500. So what is the depreciation of plant and machinery? So this is very important that you should write additions. Additions, plant and machinery in head office, 6,02,750. And the difference is depreciation. Debtors. Debtors, we won't write it. Cash on hand 9. अच्छा ये तो हो गया, ये तो नहीं लिखेंगे. Yes, only, हाँ. Rate of depreciation over. General expenses 24,000. So 24,000 general expense. And general manager's salary we have written. And general expenses 24,000. So salary also 24,000. Here, what is important? New concept. So you will merge branch profit in your GP. So branch profit in your GP. So what is the branch profit? 53,032. This is also new concept. 53,032. So we will record in our profit, we will add branch profit. So HO plus branch. My income plus my son's income. That is our total income. So here I have to add my son's income, branch profit. So this is a new concept. Okay. So दो नई concept. And closing stock I have to write. Closing stock 312,500 729,750. So now my GP is 597,075 plus 53,032 minus 2150 minus 136,500 minus 24,000 minus 24,000 463,457 into 10 upon 110 is a commission. So my commission is 42,132. So this is the commission and final figure is 457 में से ये माइनस कर दूंगा 42,1,324 4,21,325. See the answer. Yes. 4,21,325 over. So what are new concept, beta? Yes. Any difficulty? So what are red pen adjustments? GSTB and branch profit. Yes. If anything is not clear, you can ask me. Any adjustment. Any adjustment. If not clear, so take a trading and P&L account. Screenshot.
Very good, Harshit. Then beta GSTB and branch profit. Harshit is saying all difficulties solved. Already adjusted in above figures means beta it is after depreciation. Already adjusted Rupali इसका meaning होता है these figures are already after depreciation. Explain depreciation adjustment. Manoj Kumar, 100 rupees if you purchase GSTB is deducted. 100 rupees you purchase. आपने 100 रुपए का purchase किया मनोज जी. If you purchase 100 rupees and out of that you send to branch 20 rupees, so your net purchases in your head office books is only 80. So you have to deduct it. Sorry. Yes. If you have any query, you can ask me, beta. जल्दी जल्दी बोलो. Yes, you can take a screenshot of this also. और किसको सर जीपी बता दो. ग्रॉस प्रॉफिट इज अ बैलेंसिंग फिगर. मोहम्मद तू जीपी कैसे पूछ सकता है भाई. जीपी कौन पूछता है बेटा. इट्स अ बैलेंसिंग फिगर. ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा. मोहम्मद यू आर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स और व्हाट. बेटा डिप्रिसिएशन. नहीं बेटा पूजा. नहीं बनाया तो भी चलेगा. यस हर्षित 8 नंबर का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा. एंड देन विल टेक अ ब्रेक. ओके. एंड प्लीज टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द रिको यू नो concept of independent branch. So today I'm going to explain you independent branch. और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. इंडिपेंडेंट ब्रांच का प्रॉब्लम कंप्लीट करने का. And what about depreciation? Beta, depreciation is nothing. See, these figures are after depreciation, closing figures. So closing figures are after depreciation means 21,500 minus 19,350 is depreciation. And how you can calculate 21,500 into 10%? But 3,07,250 plus 162,750. Oh, sorry, 6,02,750 into 15% is depreciation, both figures. And after deducting this, you will get amount of 773,500. कितना इजी है. जीएसटी भी रिटर्न किया ही नहीं है ये क्वेश्चन में. जीएसटी भी रिटर्न किया ही नहीं है तो सही में क्यों एक्सप्लेन करो भाई. तुम लोग यार थोड़ा दिमाग लगाओ रे ये क्वेश्चंस को. ये क्वेश्चंस आर रियली ट्रिकी वन. आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ये क्वेश्चंस पे. यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन. These questions are not at all easy. But now what happens after the class, beta, you won't solve it once again. And then you will find the problem. चलो ये प्रॉफिट ले लो. It's very simple question now. We already invested 1 hour in this question. 1 hour is not a small time, बेटा. आज 8:30 9 तक मैं सेशन खींचूंगा आपका. आज तो बहुत सारा करवाना है आपको बेटा. एंड आई एम गोइंग वेरी स्लोली बेटा फॉर दिस क्वेश्चंस. और इंस्टीट्यूट ने भी मुझे अच्छे खासे टाइम दिया है बेटा. स्टिल वी हैव 2 सेशंस. अभी वो 2 सेशन नहीं 3 सेशंस. तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका. चलो वन मोर क्वेश्चन. इलुएट
आ जाओ इलो 8 पे. Many students they found this question very difficult one. It's actually very easy. चलो 8 नंबर. Branch adjustment account is open to cancel loading beta. Messrs Rahul operates a number of retail outlets. Wholesale price का cost is 100 plus 25%. C. Cost plus wholesale का profit or loading. So this is wholesale price. And retail price is इसमें प्रॉफिट ऐड करके रिटेल प्राइस. WP is wholesale price and RP is retail price. So cost 100, 25, 125 and plus 20% into 20%. You got this? Yes. So into 20%. Now, outlet stock account is recorded at invoice price. And stock reserve, we calculate only opening and closing stock reserve. In branch adjustment account, we calculate opening, closing, GSTB loading, GSTB return loading. So every loading, okay, not only opening and closing. In branch adjustment, so you can write over there. In branch adjustment account, we calculate opening, GSTB, and closing loading. Okay. So stock reserve and branch adjustment account has one line difference. Listen it carefully. IMP. You can write this note in your 100 pages book. Branch stock reserve calculates only opening and closing stock loading. Okay. And branch adjustment account calculates loading on opening, GSTB, and closing. So GSTB is also considered. Okay. So what is the difference, beta? You can write it in the comment section. Chalo, chalo, chalo. Sumant will explain fifth ka bhi. But we are going to discuss all illustrations. So don't worry. After break, I'm going to first take revisions. Independent branch theory for 30 minutes. And then again, we will solve remaining illustration 5, 4, 5, and 6. Okay. I'm not going to leave you till all illustrations we have completed. Commitment is commitment. देख बेटा, कुछ चाहते हो ना, दिन भर आपको आज ही मैं पुणे आया कोलकाता से. आई स्टार्टेड माई वर्क 1 o'clock को मेरा फ्लाइट छूटा. मैं 2 o'clock को घर पे था. 2:30 से लेके 5:30 पे मैंने पूरे नोट्स निकाले, मेरा प्लानिंग किया कि अभी मेरा पुणे में स्केड्यूल क्या होगा. प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. सो 1 month का मेरा स्केड्यूल क्या होगा, कौन से बैचेस है, प्रैक्टिस में कौन से क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, कौन सा टाइम मुझे होटल के लिए देना है, एवरीथिंग इज परफेक्ट. ओके. सो ये मेरा प्लानर इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैं वो स्टिक करने की कोशिश करता हूँ. ओके. मुझे वाइफ को कितना टाइम देना है, बच्चे को कितना. ऐसा नहीं होता है कि दक्ष के साथ फिर आधा घंटा में खेला भी. ऐसा नहीं होगा कि उसको भी छोड़ दिया. सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो एटलीस्ट एट स्टूडेंट एज यू हैव ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टडिंग.
I know you are in pressure, but planner is required. 7 days का planner is required. Okay, चलो. So outlet stock account. Outlet stock account we maintain at invoice price. So this is at invoice price. ठीक है. Goods invoiced to the outlet during the year. So बेटा ये स्टॉक आउटलेट के लिए डेबिट साइड में आएगा. स्टॉक के डेबिट में. स्टॉक के डेबिट में. GSTB loading beta we will cancel in branch adjustment credit side, no? GSTB we record on the debit side, stock account mein. So loading will be cancelled on the opposite side. Opposite side in branch adjustment credit side. If it is the debtors method, we cancel it on the very opposite side. If it is stock and debtors method, we open separate account branch adjustment. Anmol, I'm not expecting such questions from you, beta. अनमोल कैसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन बेटा? यू नो ऑलरेडी दिस कॉन्सेप्ट्स. अनमोल, इज इट डिफिकल्ट? Gross profit made by the outlet. So from gross profit, you can calculate sales. Now, beta, this is FM knowledge. From gross profit, calculate sales. This is IMP. So gross profit से हम लोग क्या निकालेंगे? Sales. So gross profit is 60,000. So what is sales? 60,000 into 150 divided by 25. 3,60,000. This is IMP adjustment. Gross profit is of, this is branch profit. This is head office profit. Okay. No, beta. फिर हम लोग, if branch adjustment account is asked, then you calculate that amount. Stock reserve में calculate करने का ही नहीं. Outlet P&L is a separate. Okay. Goods lost by the fire. Yes, balancing figure. Expenses P&L में जाएगा. And this is in stock account, credit side. Stock account के credit side में. Now how to solve this? One by one. Yes, I will prepare 2-3 accounts. Branch stock means outlet stock. Branch means outlet stock. Outlet stock. How to solve this question? Yes, outlet P&L. And now I'm not writing outlet and then stock reserve account. Chalo. So outlet stock. What is the debit balance? 30,000. So to opening stock, 30,000. On opening stock, you will cancel loading. So this is 25 upon 125. 125 includes wholesale price. So how to calculate? By branch stock account, outlet stock account, 25 upon 125. 6,000. Goods invoice to the outlet, 3,24,000 to GSTB. GP, 60,000. And in branch P&L, by GP, 60,000. From GP, you calculated. This is hidden. This is red pen. From 60,000, you calculated 3,60,000 by sales. This is hidden. By sales is hidden.
expenses, goods lost by fire, goods lost by fire, and P&L debit, goods lost by fire. So this is branch account, branch stock gaya, and it's a branch P&L में loss. So two effects. Goods lost by fire is we are having new adjustment, two effects. So goods lost by fire is also new adjustment. You can write it. Branch stock credit side because stock goes out and loss है तो P&L debit side. You have to calculate this. And by closing stock, expenses we have written two expenses 20,000 in P&L and outlet stock is 36,000. So 36,000 pe loading on the debit side. 36,000 into 25 upon 125. So this is, we will transfer it to branch adjustment account. And by branch adjustment account, this 7,200. And 6,000 where we are going to transfer it? To branch adjustment account, to stock adjustment account. Okay, so this is how we calculate this account. Stock reserve account first time. Stock reserve, you can write it on the question. IMP first time. Now what is the balancing figure? Goods lost 30,000, 3,24,000, 60,000 minus 3,60,000 minus 36,000. 18,000 is a loss. Here on the debit side 18,000, 18,000, 18,000. So balancing figure 22,000. So net profit 22,000. You can check the answer. Yes, 22,000. And stock reserve, instead of they transfer it to HOP handle. Okay, not branch adjustment. They transfer it to HOP handle. Sorry. So we don't write here to branch and by branch adjustment because this is wholesale price method. But if it is a debtors method, stock and debtors method, so we transfer it to branch adjustment. Okay. So they transfer it to HOP handle by HOP handle. Okay. So instead of branch adjustment, so this is first time you are writing it. Okay, sir. So take a screenshot. Take a screenshot and red pen adjustments. Yes. So understood. So what is new in this question? From GP, calculate sales, hidden, red pen. This is at invoice price, red pen. This is balancing figure, first time. First time. First time, goods lost by fire. So you can write it by red pen, first time. And transfer it to HOP handle, second line. So ये इधर आएगा, ये इधर आएगा. By balance brought down to HOP handle, to balance carried down by HOP handle. Okay, so take a screenshot, some hidden adjustments. By using GP, you can calculate sales. An index will help you out to understand the question. So take a screenshot of this. Yes, any difficulty? Any difficulty in this question? Okay. ऋतुराज, डेटर्स मेथड में हम लोग लोडिंग सामने कैंसिल करते हैं बेटा, एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग स्टॉक एंड डेटर्स में ओपन करते हैं, एंड स्टॉक रिजर्व ये हम लोग होलसेल प्राइस में ओपन करते हैं. बैलेंसिंग फिगर डिंपल, स्टॉक रिजर्व का बैलेंसिंग फिगर वी ट्रांसफर इट टू HOP एंडल. ओके, स्टॉक रिजर्व HOP एंडल में हम लोग 7,200 माइनस 6,000, तो HOP एंडल में 1,200 जाएगा. ओके डिंपल जी. Don't miss, please, a single session of branch.
यस। सो ये क्वेश्चन था। सर इंडेक्स बता देता हूँ एक बार। इंडेक्स से आपको पूरा ज्ञान आ जाएगा। क्या क्या एमपी था बेटा, बहुत मेहनत से बनाए हुए इंडेक्स आपके लिए 8 नंबर में। एचओ प्रॉफिट, ओपनिंग डेबिट जीपी गिवन, कैलकुलेट सेल्स गुड्स लॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक। पी एंड एल में नेट प्रॉफिट इज अ बैलेंसिंग फिगर एंड स्टॉक रिजर्व बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ये टू एचओ पी एंड एल एंड बाय एचओ पी एंड एल। एकदम इजी है। अच्छे से करो बेटा, सब समझ में आ जाएगा। स्टॉक रिजर्व में डोंट कंसिडर जीएसटी बी लोडिंग एंड तो इसमें मेन चीज क्या था, जीपी से सेल्स निकालना। फ्रॉम जीपी यू विल कैलकुलेट सेल्स, बैलेंसिंग फिगर इज गुड्स लॉस्ट, पी एंड एल निकालना एंड स्टॉक रिजर्व। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यू एडजस्टमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझी गयो। जीपी पे से बेटा अंकुर, जीपी जीपी अपॉन सेल्स इज इक्वल टू जीपी रेशियो बराबर है। अभी जीपी रेशियो मेरे पास 60,000, तो ये 25। अभी ये जीपी 25 है तो ये 150 है, सेल्स 150 है। तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा जीपी रेशियो के फॉर्मूले से। तो जीपी सेल्स मेरे पास कितना आएगा, जीपी 60,000 है तो सेल्स कितना ब्रांच का। ये लोडिंग ऑफ ब्रांच नहीं है, ये हेड ऑफिस है। ये प्रॉफिट ऑफ ब्रांच है। सो हमें हेड ऑफिस का लोडिंग कैंसिल करना है। सो 25/125, इधर प्रॉफिट का सेल्स निकालना है। सो इंटू 150 डिवाइड बाई 25। फिगर्स आर डिफरेंट। करो अच्छे से बेटा, एकदम इजी है, एकदम इजी। वंस यू गॉट द कॉन्सेप्ट। साहिल कुछ भी पूछ रहे हो बेटा, कुछ भी। पीपी कहां से आएगा स्टॉक में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गुड्स होते हैं क्या। क्या क्वेश्चन है बेटा, बेटा साहिल, थोड़ा सा लॉजिक लगा। स्टॉक मतलब गुड्स होता है कि नहीं बेटा। मतलब थोड़ा बेटा दिमाग लगाओ रे, इसका और इसका सीए कोर्स में 20 ही बच्चा पास होगा। थोड़ा तो लॉजिक लगाओ रे। थोड़ा बेटा, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, आप लोग मतलब कुछ मतलब ही नहीं बनता है कि क्या पूछ रहे हो। चलो ठीक है, कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकता आपको। आप लोग एकदम सीरियसली लेते ही नहीं। बेटा हर्षित सेल कौन कर रहा है बेटा, होलसेल प्राइस पे कैसे निकलेगा। सेल करने वाला ब्रांच है तो ब्रांच अपना प्रॉफिट लेके करेगा कि नहीं बेटा, है कि नहीं। कोई बात नहीं, चलो टेक अ ब्रेक। विल मीट एट 7:35। 7:35 को मिलेंगे। थोड़ा सा यस, हर्षित का तो भी क्वेश्चन थोड़ा वैलिड लगा मुझे कि ब्रांच का प्रॉफिट क्यों लेना है, बिकॉज सेल्स कौन कर रहा है वो चेक कर। तो जो सेल्स कर रहा है वही प्रॉफिट कमाएगा ना। तो उसका प्रॉफिट दिया है तो उसके ऊपर से सेल्स प्राइस हम लोग ब्रांच की निकालेंगे बेटा, है कि नहीं। ठीक है हर्षित, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट तू पूछ रहा है वो क्वेश्चन, थोड़े तो भी लॉजिकल पूछो रे, ऐसा कुछ नहीं। एंड बाकी स्टूडेंट्स बेटा साहिल, यदि आपने ऐसे क्वेश्चन भी पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा, पर मन में प्लीज डोंट कीप डाउट्स। ओके, इफ आई थिंक दिस इज वेरी इररिलेवेंट क्वेश्चन तो आई आई कैन स्कोल्ड यू, मतलब मैं आपके ऊपर गुस्सा होऊंगा। बट डोंट वरी बेटा, आपको भी ध्यान में आ जाएगा। रिटो इट विल बी जीएसटीबी, जीएसटीबी विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट ओनली बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ये कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेगा। ओके।
चलो, टेक अ ब्रेक, विल मीट एट 7:35 एग्जैक्टली। 15 मिनट्स का ब्रेक आपको मिलने वाला है। लेट्स टेक अ ब्रेक।
लेट्स स्टार्ट विथ रिको. अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इंडिपेंडेंट ब्रांच. So accordingly, beta, I don't have to explain you independent branch because you already covered in debtors method and stock and debtors method all these entries. But what you can write independent branch mein, what you can do, you can read our study material for understanding purpose. For understanding purpose, you can refer our study material. See, yes, sorry, 5 minutes late. Welcome back. Chaliye. So in independent branch, you can see here these entries for head office books and branch books. They have given it. Ultimately, I don't think these entries you need it because you already covered it in data's method and stock and data's method. But once we will go through these entries, don't worry. See, beta. Yes, if you have any question, you can ask me at the end. Dispatch of goods. So branch account debit. Branch is a receiver. You can write over there. Receiver. And branch goes out. Goods goes out. Goods comes in, or you can write over here instead of receiver, data is more clear. Okay, data is more appropriate, so you can write data. Receiver se zyada data is more appropriate, and HO is creditor because data becomes receiver at the end. So instead of data receiver giver, which relation you will apply? डेटर क्रेडिटर. तो बेटा आपको कौन सा रिलेशन लगाना है यहाँ पे? ब्रांच से पैसा आएगा, गुड्स गोज आउट, एंड यहाँ पे ब्रांच एंट्री मारेगा, गुड्स कम्स इन टू हेड ऑफिस. Return reverse entry, reverse of one, so no need. Branch expenses made by branch, no entry in head office books because branch is made these expenses. And here the entry is debit all expenses, cash goes out, cash goes out. Branch expenses are paid by HO, but obvious HO, branch is a debtor, cash goes out, and here expenses debit to head office is our creditor. Outside purchases made by branch. So branch ने बाहर से purchase किया. So if branch purchases it from the outside, okay, no entry, and purchases the account debit to creditors or cash. Sales made by branch, no entry, cash account or debtors account debit to sales. Collection of debtors of the branch received by head office. This is IMP entry. This is new entry. So this entry you can write in independent branch. New entry is not in dependent branch. So you can write it in independent branch, same entry. Collection from debtors. So whose debtors? Branch will cancel this. Branch cancels it. And collection HO records. Collection HO records. So HO के लिए collection होगा. So cash comes in, but this cash is belonging to branch. So this cash is branch को देना है. So branch is a creditor. Okay. Because this cash is not a HO. So try to understand this entry. See, here is branch. Here is debtors of branch. And here is HO. Now actually debtors should pay branch. Debtors ने किसको पेमेंट करना चाहिए? ब्रांच को. But they paid HO को. Who? They collected, sorry, debtors collected by HO. So HO कैश रिकॉर्ड करेगा एंड ब्रांच डेटर्स को कैंसल करेगा. ये कैश HO will pay to branch and branch will debit it to HO. ब्रांच किसको डेबिट देगा? HO को डेबिट देगा. You got this concept? Say yes or no. Is it difficult? This is a new entry. So debtors of branch cancelled by branch and cash collected by HO. डिफिकल्ट है क्या इजी है ये एंट्री? ये एंट्री
यस, सो ये एंट्री इजी है बेटा एक्चुअली. ओके. पेमेंट बाय एचओ फॉर परचेसेस मेड बाय ब्रांच. सो ब्रांच ने परचेस किया, पेमेंट एचओ ने किया. ऑलरेडी कवर्ड दिस एंट्री, ब्रांच टू बैंक. सो यू कैन वॉच माय प्रीवियस सेशन to understand these entries. Now, purchase of assets by branch, IMP. This is a new entry. Purchase of assets, no entry, sundry assets to bank. Asset purchased by branch, but assets retained by head office book. This is very important. Asset HO के book में to branch and head office to bank. So branch paid it, but asset of HO. So asset who will record? Asset will be recorded by HO. Asset HO record करेगा and payment by branch. Okay, but asset के ऊपर का depreciation, asset के ऊपर का depreciation only recorded by branch. See, asset used by branch, so depreciation we will charge to ब्रांच. ओके, ब्रांच को ये पैसा देना पड़ेगा. किसको देना पड़ेगा? एचओ को. सो एचओ इज अ क्रेडिटर एंड ब्रांच इज अ डेटर. एंड एसेट इज मेंटेन बाय. सो दीज आर टू एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन मोर टाइम. एसेट की एंट्री क्या होगी? एसेट टू बैंक नॉर्मली. ओके, नॉर्मली एसेट टू बैंक. एंड डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन टू एसेट. ओके, अभी एसेट कौन रिकॉर्ड करेगा? हेड ऑफिस. एंड पेमेंट कौन करेगा? ब्रांच. इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो इधर क्या आएगा? टू ब्रांच एंड इसमें आएगा एचओ अकाउंट डेबिट. डिप्रिसिएशन कौन रिकॉर्ड करेगा बेटा? ब्रांच. एसेट तो इनके बुक्स में है. एंड डिप्रिसिएशन टू एचओ. गॉट द एंट्री? आईएमपी एंट्री. 100 पेजेस के बुक में लिखना बाद में. Remittance we have completed. Remittance of funds by branch to HO, by HO to branch. And now this is very important. This I will explain you. Don't worry. Transfer of goods from one branch to another. So receiver to giver. Here, beta, mandatory through HO. Mandatory through HO. So supplying branch goods goes out. For supplying branch goods goes out. But don't record branch to account. Here it is mandatory through HO. Mandatory through HO. So this is also IMP. Mandatory through HO. ये ट्रिक सही है एंट्री करने के लिए. यस बेटा, एसेट टू बैंक लिखने का, एसेट रिकॉर्डेड बाय एचओ, बैंक इज रिकॉर्डेड बाय ब्रांच. सिंपल है. नॉर्मल एंट्री को याद रखने का और उसके बाद कौन क्या एंट्री करेगा वो रिकॉर्ड करने का. एकदम सिंपल है. ओके, सब बच्चों का बेसिक्स आर नॉट क्लियर. दैट्स व्हाई दे फाइंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. इफ योर बेसिक्स आर क्लियर, then beta you can solve any question of branch. See, branch accounts, 99% students they find it very difficult because their concepts are not clear at all. उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते. आपने घर पे 2 बार प्रैक्टिस किया ना, 2 बार, इट्स वेरी सिंपल. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. समझी गए बेटा? ओके, चलो. एनी डिफिकल्टी? हाउ मेनी एंट्रीज यू आर गोइंग टू राइट इट इन योर 100 pages book? All entries, no need beta book because we already covered for data's method and stock and data's method. Now it is independent branch. Independent. Independent. Should I explain you problems also?
or should I explain you theory and you will do by your own today and tomorrow morning, because tomorrow evening we have a session. लास्ट एंट्री सी बेटा, लास्ट एंट्री क्या है? ब्रांच 1 is supplying goods to branch 2. So branch 1 is a giver and branch 2 is a receiver. So HO will record entry branch 2 account debit to branch 1. Okay. But branches जो है ये through HO जाएगा. So what branch 1 will pass entry? HO account debit to goods sent, and they will record entry goods received to HO. Branch 2 will record goods received, receiver, goods received, and goods goes out. Yes. Depreciation की एंट्री बता दो. तहसीन. Depreciation to asset. Who will record asset? HO. And who will record depreciation? Branch. So HO will record branch account debit to asset, and he will record a depreciation to HO. This is the simplest way to pass any entry. First, try to understand normal entry and then check who will pass these entries. बाकी लोगों को कमेंट्स नहीं करने हैं क्या? सो जाए क्या? You don't want to comment? Are you not taking it seriously? Whether it's very difficult to type these things? टाइपिंग करो ना थोड़ा सा. लेजी हो? Only Harshit and Anmol are answering. मॉर्निंग मतलब इवनिंग है तो आप बोर हो गए हो क्या? एनर्जी लेवल डाउन है. मैं सिखाऊं ऐसे विदाउट एनर्जी? टाइप इट फास्ट. Which one are difficult entries? I have given all you IMP entries. अभी राम का रिप्लाई आया. एक 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 एक. यस नो बोलने को भी डिफिकल्ट है. बोर होते हो तो फिर छोड़ दो यार सीए कोर्स. इफ यू डू नॉट हैव ड्रीम्स, हमेशा बोलता हूं मैं, सपना देखना ही नहीं है. सिर्फ बैठे आराम से थोड़ा रिप्लाई दोगे तो एंजॉय करोगे. अबे आने लगे रिप्लाई. गिव अप करना कैसे नहीं आपसे सीखना चाहिए. एनर्जी डाउन होती है इनकी. 2.5 घंटा में बिना ब्रेक का कंटिन्यू बात कर रहा हूं. एक से 15 मिनट का ब्रेक थोड़ा सा वो भी देती है इंस्टीट्यूट. सब एंट्रीज इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हुई कवर्ड. Tenth entry I already explained you. Asset account debit to cash. Cash will be recorded by branch and asset will be recorded by HO. So asset account debit to branch and who he there HO account debit to cash. Energy, if you do not have energy beta,
It's better to see the another course. Don't waste your time in this course. Better depreciation because they are using the asset. So if they are using the asset, the ultimately, if you are living with your family, dad is giving you mobile. So mobile is actually dad's asset, but used by you. So depreciation will be recorded in your books, and dad will record the asset. Dad will charge that depreciation amount to you. सो आप लोगों को डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके वो पैसा डैड को देना है. सो डैड इज यूर एचओ. सो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, डैड को पैसा देना है टू डैड, एंड डैड विल रिकॉर्ड सन्स अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्योंकि उनकी तो एसेट रिड्यूस हुई ना. चलो, नाउ बेटा आई एम गोइंग टू टेक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, very very important concept. Try to understand in HO books. Now you only tell me books of HO, sorry, books of branch account, and here head office account. I am giving you exactly 5 minutes. Normally it starts with the debit balance because branch sells goods. So for HO, branch is a debtor. Branch is a debtor and branch becomes giver. And here creditor and branch becomes receiver. Now what you have to do? You have to see the first entry. Branch account debit to GSTB. And accordingly, you will open these accounts to GSTB. Here I will write buy balance brought down, and in branch books buy goods received from HO. So same thing, by looking into entries, you prepare this ledger and send it to me. ये ledger भेजिए या आप open कीजिए, and then I will explain you. I am giving you exactly 5 minutes. कैसे करना है? It's very simple. कैसे करना है? ऐसा एंट्री देखना है. एंट्री बाय एंट्री.
ते फॉर्मच होतं पावभाजी आणि फायनल माहिती मी ह्याच्या खाली कसं बनतं ते टाक काय काय आहे. इथंच करत जा. चलो बेटा. अनमोल ने लिख दिया टू बैंक बाय कैश. एक्सपेंसेस पेड होगा तो रेमिटेंस बाय एसेट टू ब्रांच एसेट डेप्रिसिएशन उद्या. See बेटा. You can check here whenever in our books it's a two balance brought down. In branch books it's a by balance brought down. When you have received sent goods to branch, then branch receives from the head office. Then beta, when expenses paid by the branch HO, so by sorry here I forgot to write. Sorry, it's my expenses. It's my expenses. So expenses. Then by cash to cash remittance. By asset to bank. HO pays it. And depreciation. By depreciation to HO. And here branch to branch assets. Supplying of goods we have not written. So these are some items. What I want to prove, what I want to tell you is when you debit branch
HO books when debit to the branch, then in the branch books, HO account is credited. समझी गए हो? एकदम easy. And suppose if there is mismatch, if there is mismatch, if branch has debited but HO has not credited, yeah, HO debited, branch has not credited. If mismatch, we need reconciliation. What we need? So this is a step one of independent branch. Step one of independent branch that you have to do reconciliation. सबसे पहली स्टेप क्या है बेटा आपकी? हिंदी में समझ लो. हमने ब्रांच को डेबिट किया, एचओ को क्रेडिट किया. एचओ के बुक्स में ब्रांच को क्रेडिट किया, तो एचओ ब्रांच के बुक्स में एचओ को डेबिट करना है. लास्ट में दिस बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड दिस टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये इज इक्वल टू है. इन ब्रांच HO books, branch is a debit balance, and in branch books, HO has a credit balance. At the end, what happens, beta? These balances are matching. Sir, if not matching, if there is a mismatch, so beta, you have to do RECO, and after RECO, balances are matching. Now, my question to you: who will do RECO? Who will do RECO? That you have to find out in the next session. Okay, so first question you understood. So question number one, yaad rakhna, who will do that RECO? Okay, who will do that RECO? Read carefully, theory, try to understand. Then what is the step two after reconciliation? We have to merge their profits. HO का profit independent है. We are not going to prepare branch books by using here beta dependent होगा तो debtors method and stock and debtors method, but this method are now no useful beta. So independent में branch will prepare trading and P&L account. What branch will prepare? Branch will prepare trading and P&L account. Okay. No, beta, I'm not going to tell you the answer. But I have not taken all entries. I have taken few entries. Okay. All entries you can do by your own now. Now you understood. Step two, merge their profits. Now how to merge their profits? Independent branch prepare trading and P&L. This is option one. Okay. So option one is beta, branch will prepare journal entries. Branch will prepare ledger. Branch will prepare trial balance. Okay. Independently. Now after trial balance, there are three methods. So branch is independent. Journal entries beta, they have to do it. Ledger accounts, they have to do it. Trial balance, after trial balance, what happens? ट्रायल बैलेंस के बाद ही तो बड़ी चीज होगी. आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन वन, branch will open trading and P&L and balance sheet. Own means normal problem. And this trading and P&L of branch and balance sheet, then HO plus branch combined trading and P&L accounts. We will prepare combined trading and P&L. Okay. HO column, branch column, total column. Total column is combined. So which is called as, in simple language, consolidation. Option two, branch transfers
ट्रायल बैलेंस टू हेड ऑफिस, branch transfers trial balance, whole trial balance to head office. So branch का पूरा ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर होगा. So you have to read theory for option 2. And what is option 3? Branch transfers partial trial balance to head office. So branch will prepare final statement for partial. Okay, partial they will transfer, partial trial balance with branch. So this is option 3. बेटा this is end. इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा. नाउ सस्पेंस विल बी ओपन टुमारो. कहां आके छोड़ दिया आपको? बिकॉज आई ऑलवेज प्रेफर टू गिव यू होमवर्क. ओके, आप बिना प्रिपरेशन का मेरे क्लास में नहीं आने का. नो, I won't like it because my aim is not to explain you the concept. My aim, you should sit and understand by your own also. ये मेरा टारगेट है. See, accounting standard में I haven't used that technique. Why? Because that problems are not practical problems like branch. Here I can explain you concept. I will give you some homework. Keep do this homework. Now 10, 11, 12. Now these questions are based on beta. देखो. Now question 10 is based on 9 is based on RICO. 9 is based on RICO. Whatever the questions we covered. 10 is based on beta total column. So partial trial balance beta. So this is also RICO. Then 11 number is columnar trading and P&L and balance sheet. So this is method 1. Illustration 12, empty karo, partial trial balance transferred. Okay. And last one, full trial balance is transferred. ठीक है? 13 and 14. So up to 14, there are questions. What you have to write it in your 100 pages book, beta. 100 pages के book में क्या लिखना है? So illustration now you can correlate with this. Tomorrow give at least 4 hours for question 9 to question 14. Okay. Question 9 to 14 को at least 5 hours तो भी दीजिए. You can prepare this ledger accounts but in full way. Okay. So ये ledger accounts बनाओ. First you will write that journal entries. Then you will write this theory, ledger accounts, mismatch, then reconciliation. So this is your closing statement. After preparation, closing statement, HO books, debit balance, branch books, credit balance. Then you have step 1, RICO. Who will do RICO? I will explain it in the next session. And step 2, merge profits and balance sheet. HO, branch, independent, trading and P&L is option 1. Journal, ledger, TB. And TB के साथ क्या करेंगे? Journal ledger is common in all methods. TB, branch will open trading and P&L. Option 2, branch transfers trial balance to head office. And option 3, branch transfers partial trial balance to head office. एक बार हिंदी में. मजा आया? एंजॉइंग ना बेटा? क्या करना है समझ में आया क्या आपको? आज के प्रॉब्लम में बड़ा बहुत जरूरी है आपको ये समझ में आना. एक बार समझ लो. यस. आय थिंक इन द इव्हिनिंग ना टुमॉरोज क्लास. चेक करे उद्या क्लास संध्याकाळी का सकाळी. सुबह होगा तो अच्छा होगा फिर. एक बार देख लेता हूँ. आई डोंट नो एग्जैक्टली. देखो बेटा, एक बार हिंदी में समझ लो. देखो हमें एचओ के बुक्स में ब्रांच को डेबिट देना है क्योंकि ब्रांच से पैसा आने वाला होता है. तो ब्रांच इज अ डेटर. एंड एचओ के बुक्स में ब्रांच को क्रेडिट करना है. ब्रांच के बुक्स में एचओ को क्रेडिट करना है.
नहीं बेटा, 9 to 14 इज नॉट होमवर्क, यू ट्राई ऑल दिस इलस्ट्रेशंस। बोथ ग्रुप स्टार्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, सो बेटा पहले तो आपको क्या करना है, ये बैलेंसेस दोनों एक दूसरे से मैच होना चाहिए। जितना एचओ को ब्रांच से लेना है उतना ही ब्रांच के बुक्स में एचओ को देना है। सो मिसमैच नहीं हुआ तो रिको लगेगा। देन स्टेप 1, रिको होने के बाद यदि नहीं हुआ, रिको नहीं हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिको फर्स्ट। ओके, आपको रिको करना पड़ेगा। रिको के बाद सेकंड स्टेप क्या होगी आपकी, सेकंड स्टेप आपकी होने वाली है रिको के बाद मर्ज करना ट्रायल बैलेंस, पी एंड एल बैलेंस शीट। ओके, सो आपके पास अप टू जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस इंडिपेंडेंटली ब्रांच विल प्रिपेयर। देन यू हैव थ्री ऑप्शन, आपके पास तीन ऑप्शन है। ब्रांच खुद से ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बनाएगा। दूसरा, ऑप्शन टू, ब्रांच अपना ट्रांसफर कर देगा पूरा ट्रायल बैलेंस टू एचओ। एचओ भाई तुम ही देख लो, हम लोग अपना ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, हम हमारा ट्रायल बैलेंस आपको देते हैं, आप देख लो क्या करना है आगे। और तीसरा क्वेश्चन है, ब्रांच जो है वो पार्शली बना देगा। हर्षित आज कुछ नहीं बताऊंगा बेटा, आज तो मेरी क्रिसमस है भाई, सस्पेंस है। ओके, आपको मूवी नहीं देखना है, हाँ, सस्पेंस है आपके लिए, मेरी क्रिसमस। ओके, आज कुछ नहीं बोलूंगा, पूरा मूवी कल एक्सप्लेन करूंगा। आज तो सिर्फ समझ लो, देख लो क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या करेगा। मैं आज ही बता दूंगा बेटा, तो तू रीड ही नहीं करेगा। तुझे खुद से इंडिपेंडेंट करना है, या डिपेंडेंट ही रहेगा संकेत सर के ऊपर। सर हमेशा थियोरी एक्सप्लेन कर देते, आगे ऐसे मोड़ पे आके छोड़ देते कि बच्चा खुद से कर लेगा। हाँ बेटा, नेहा सच बोलूं तो नहीं होगा। बोथ ग्रुप अब भी स्टार्ट करने वाले रहेंगे और फर्स्ट ग्रुप बहुत अच्छे से किया है, तो फिर ठीक है, हो सकता है। पहले ग्रुप के भी वांदे, वो अच्छे से रीड नहीं हुआ और दूसरा ग्रुप देना है, तो फिर मुश्किल है। पर फर्स्ट ग्रुप आपका 50% भी तैयार है, तो सेकंड ग्रुप ट्राई करने में कोई हरकत नहीं है। और नया अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे जाना पड़ेगा, अभी लाइव लेक्चर्स रिकॉर्ड करना इज वेरी डिफिकल्ट। यस अंकुर। ओके, मजा आया बेटा। यस, एंजॉय। अभी एक एक सम जो है, 5 नंबर का सम, वो आज कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको छोड़ता हूँ। ठीक है बेटा, 5 नंबर का सम करके छोड़ता हूँ। 6 नंबर का इजी है, वो कल थोड़ा वार्म अप में ले लेंगे, मतलब आप भूलोगे नहीं। एंड टुमारो रिको, एटलीस्ट 3 से 4 सम्स, एटलीस्ट 3 से 4 सम्स कल, तीन तो भी। टुमारो सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट, because students are normally getting dependent branch by using that pro forma, but better lectures, no, I'm not talking there only for lectures. I'm talking about how you have prepared till now, whether you remember each and every concept, then it's okay, because till now you must complete your at least costing part, और जीएसटी थोड़ा बहुत बचा होगा तो ठीक है। इफ यू लेफ्ट विथ 3 more months, 3 more subjects टोटली ब्लैंक, तो बेटा थोड़ा सा मुश्किल है। चलो 5 नंबर पे आ जाओ, 5 नंबर। Following is the information of Jammu branch of Best New Delhi for your ending 31st March 2002. Now this question is similar to 8 number, similar to, but not exactly same, because 8 is sim.
another different part, beta. Goods are invoiced at cost plus 50%. 100, 20, 120. And sales price is 50%, 30, 150. Okay. Now stock at invoice price beta. So 2,20,000 cost, loading, profit, selling price. So 2,20,000 में कितना लोडिंग? स्टॉक एक्चुअली ब्रांच का प्रॉफिट पूछा है. So stock reserve is 36. Only closing stock we need. Opening stock they don't ask you. Only closing stock. If opening stock is asked, then 36,667. 2,20,000 profit earned by the branch. So this is branch stock account. 11 lakhs. Sales 12 lakhs. Now beta sales is given. तो प्रॉफिट कितना? सेल्स 12 lakhs, 2,40,000. And balancing figure is closing stock here. 3,60,000 is a closing stock. So branch stock is maintained at invoice price. It's very simple. Debit, debit, credit. Here IMP, what is hidden? Calculate GP. Calculate GP. Now from GP, you can calculate sales. And from sales, you can calculate GP. It's very simple. साठ हजार. Loading is 60,000. Yes. And expenses is 45,000. GP 240. 195. Okay. Yes, beta. So same thing. Profit of branch. So branch at invoice price maintain करेगा. Branch will maintain trading and P&L account at invoice price. All is at invoice price. बेटा मेरे मेथड से जाओ, इंस्टीट्यूट के मेथड से मत जाओ. 120 का कॉस्ट है, 150 का प्रॉफिट है. सो 1,20,000 डिवाइड बाय 150 इंटू 30. And how to present the answer? Yes. So 5 number is branch profit is asked. Trading and P&L is open at invoice price. GP ratio is given in the question. So balancing figure is closing stock, and by deducting expenses, net profit. Branch stock reserve in opening stock and closing stock of the branch. But ICAI has taken only closing stock reserve. Opening nahi liya. Only closing stock ka reserve. And how to present the answer? You can take a screenshot. करो बेटा, आज खुद से करो ये. So I explained you this question is very simple.
सिंपल सिंपल क्वेश्चन एंड एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 4 नंबर का। 4 नंबर इज ऑल्सो वेरी सिंपल। यस, डेटर्स मेथड है। यस, 4 नंबर यू कैन डू बाय योर ओन। सिर्फ कंबाइन करना है ऑल 3 मंथ्स का। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। यू कैन डू बाय योर ओन। मेमोरेंडम कैश इज नॉट ओपन इज ऑल्सो ओके। कैश ओपन नहीं किया तो भी चलेगा। दिस इज 4th नंबर। सो 4th नंबर यू डू बाय योर ओन। इट्स अ डेटर्स मेथड, सिर्फ मंथ्स ऐड करने हैं आपको। जेड कैटेगरी भी बोल सकते हो इसको। एंड 5th वन इज इजी। यस, 5th वन। ओके माय डियर, सो नाउ यू कैन डू बाय योर ओन। 4 नंबर you can do by your own. 6 नंबर tomorrow we'll solve as a warm up। तनिष्का, 100 रुपए का कॉस्ट था, 20 रुपया लोडिंग था, 120 रुपया इनवॉइस प्राइस था, 150 रुपया कॉस्ट प्लस 50%। कॉस्ट प्लस 50 मीन्स कॉस्ट इज 100, तो 150 इज अ सेलिंग प्राइस। ओके, कॉस्ट प्लस 50 एंड सेल्स प्राइस इधर लिखा, तो 30/150। ठीक है, टिल देन बेटा, बाय बाय, टेक केयर and good night. I hope you enjoyed today's session. Now it's time to do lot of homework. So solve. Try to give at least 3 to 4 hours. So tomorrow you will enjoy. Okay, minimum 3 to 4 questions we are going to solve tomorrow. Independent branch. Thank you and take care. Bye bye, my dear. Okay, bye bye and good night. Manish ji, good night.